Greetings to everyone world over. Wishing you all a wonderful Saturday evening. What a pleasure to have all of you with us. Thank you very much for joining us. It's a wonderful evening. And I'm pretty sure world over, green morning, green afternoon, green evening, wherever you are, in the different time zones, in the different countries, in the different continents, in the different moods, perceptions, education ecosystem. Yes, humanity is enjoying. We all learn from each other. Each and every moment is where we share, we learn, we pick up something new from each one of us. Today, we move ahead on Saturday, 3rd of December, webinar 1742. And today's topic, once again, because we are focusing on teachers, educators, trainers, counselors, technocrats, education ecosystem, right? Schools, colleges, universities, institutions, whosoever is in the different verticals, all of us together. Global teachers, competence matrix. What a wonderful subject, because let's see what is happening world over, how the things are shaping, and what exactly is the vision. On behalf of ICSI, International Chamber for Service Industry, we extend a very warm welcome to all our brothers and sisters across the globe, Indian diaspora, corporate houses, government, and other personalities world over. Today, 3rd of December, by the United Nations, it's the International Day of Persons with Disabilities. So, ladies and gentlemen, take action, disability inclusion in everything. And if you see in a little larger canvas, God has made all of us something very special, with some special qualities, with some special skills. And from skills, we will go to the competencies today. Now, what does it mean to be globally competent? There's a world, that's a globe, and there is a competence. Now, so far we have been talking. आज तक हम बातचीत करते थे स्किल्स की, कि आपके पास एडिकेट स्किल होनी चाहिए, एजुकेशन के साथ स्किल आनी चाहिए. अगर एजुकेशन के साथ स्किल होगी तो आपका अच्छा जॉब मिल सकता है, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप स्टार्टअप में जा सकते हैं. स्किल स्किल स्किल, everybody was talking about. When we move little ahead of skill, that's the competency. And when you move little further ahead, skill to competency, competency to capabilities, and when you have a combination of everything, अब competency है क्या? How does it differ from skill? मान लीजिए आपके घर में वाटर टैप लीक कर रहा है और मैं उसकी वॉशर चेंज कर देता हूं, उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो लगाकर फ्लायर मैं उसको रिपेयर कर देता हूं और वॉशर चेंज कर देता हूं. सो आई हैव गॉट स्किल ऑफ दैट ऑफ प्लम्बर. आपका एसी काम नहीं कर रहा है, एसी में कुछ डिफेक्ट है, गैस रिचार्ज करने वाली है, या उसका कोई फिल्टर नहीं काम कर रहा है, या उसको क्लीन करने वाला है, और मैं उसको मेंटेनेंस करके रिपेयर करके ठीक करके आपको दे देता हूं, तो आई हैव गॉट द स्किल बेसिकली टू रिपेयर एयर कंडीशनर. उसी तरीके से घर की कोई लाइट नहीं चल रही है, मैं उसे ठीक करता हूं, इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूं, वायरिंग शायरिंग ले करता हूं. सो वंस अगेन इट कम्स माय स्किल. हर एक के पास कोई ना कोई स्किल. लेकिन जब आप किसी चीज की महारियत ले लेते हैं, जब आप किसी चीज की डेप्थ में जाते हैं और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को, उसको जोड़ तोड़ सब चीजों से, और आप बहुत सारी स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं, तो वो स्टेज आती है कॉम्पिटेंसी की. यानी कि यू आर कॉम्पिटेंट, जहां पर आपका टैलेंट, आपका एटीट्यूड, आपकी स्किल और आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स और बहुत सारी चीजों को जोड़कर हम एक ऐसा सॉल्यूशन देते हैं जो अपने आप में नायाब है, क्रिएटिव है और डायनामिक है और समथिंग न्यू है और बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आता है. सो the competency is the next stage after skill. So what does it mean to be globally competent? आइए इसके बारे में आज बातचीत करते हैं. बहुत सारे देश हैं, lot of countries are there, lots of people are there. There is a, oh my God, how many billions is the population? Write down on the YouTube, how much is the population in the globe as on date this evening. जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है?
थोड़ा डालिए यूट्यूब के ऊपर, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तब तक मैं आपसे बातचीत करता हूं, क्योंकि हम टीचर्स पर फोकस कर रहे हैं और टीचर्स की ग्लोबल कॉम्पिटेंस की बातचीत कर रहे हैं और ग्लोबल कॉम्पिटेंस की मैट्रिक्स की बातचीत कर रहे हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स। नाउ पर्सपेक्टिव्स क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, नॉलेज क्या है, कंडीशन क्या है, what people think, how do they communicate, what students are thinking, what are the diverse perceptions what we have got, how we are reachable to the others, how do we react towards others' cultures, and how do we collaborate with others, different languages and different expressions, different ideas, different impacts, and media अपना impact देता है। We get different influences from various quarters, various areas। इतनी सारी चीजों को जब हम लेकर चलते हैं, the societies, the communities, and the continents across the world, how do they get focused? What are the boundaries? How do they get connected? How do they appreciate each other's culture? और वो competency क्या है? टीचर को एक ग्लोबल टीचर बनने के लिए, एक ग्लोबल क्षमता के लिए कौन सी कॉम्पिटेंसीज चाहिए? स्किल से हम आगे जा रहे हैं, हम स्किल पर नहीं रुक रहे हैं। आपके पास एक स्किल है, फाइन, लेकिन यू गॉट टू बी मल्टी स्किल्ड। तो आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या है? आपकी उस चीज में निपुणता क्या है? आपकी परफेक्शन क्या है? आप कितनी मेहनत उस पर करते हैं? ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज के अंदर global citizenship, collaboration, leadership qualities, critical thinking, problem solving, communication, creativity, inquiry based learning, entrepreneurship, जो भी आपका आइडियाज है। अब जो 21st सेंचुरी है, journal areas of competency of teachers for the 21st century when we talk about, तो जब वो लर्नर के साथ मेंटोर और मेंटी की हम बात करते हैं, आपको याद होगा हमने कहा था द रोल ऑफ द टीचर इज गोइंग टू चेंज, दे आर गोइंग टू बिकम मेंटोर्स आल्सो। लेट्स टॉक अबाउट टीचर्स की जो ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज है, उसकी मैट्रिक्स को जब हम लेकर चलते हैं तो वहां पर क्या है? अब टीचर facilitating the development of the learner's life and career skills and competencies, creating a conducive learning environment, facilitating learning by all means, preparing appropriate lesson plans in the line with the school, college, university vision and the mission, developing higher order of thinking competencies, skills, capabilities and talents, developing and utilizing teaching and learning resources, enhancing ethical and moral values, assessing and evaluating learners' performance, engaging in professional development. Overall, when you talk about teachers got to develop the competencies in 21st century, जो बहुत जरूरी है। जब हम competencies की बात करते हैं तो इट्स बेसिकली ये कॉम्बिनेशन किस चीज का है? कॉम्पिटिशन में क्या क्या चीज, जब हम कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंसीज में हम क्या क्या चीजों को कंबाइन कर सकते हैं? आपका एटीट्यूड, आपका परसेप्शन, आपका एप्टीट्यूड, आपकी स्किल, आपका नॉलेज, और ये सब चीजों को सक्सेसफुली कैसे आप बच्चों को पास ऑन करते हैं, एंड हाउ डू दे लर्न एंड हाउ डू दे लिव, हाउ आर दे वर्किंग एंड हाउ आर दे बिहेविंग इन द डिफरेंट कल्चरल डाइवर्सिटी। That is something very important which we all have to realize. Now, teacher competencies, when we are talking about, let's take two verticals. One is the cognitive abilities, that means your professional knowledge. Dusra aapka affective motivational characteristics, that means your professional belief, your own motivation, your capacity and a capability and a competence to motivate others, and your own self-regulation also. आपकी जो कंटेंट की नॉलेज है, आपकी पेडागॉजिकल जो कंटेंट को पास करने की क्षमता है, तरीका है, ढंग है, that is something very important which we have to take into consideration. Now, beliefs about, the teaching and the learning, whatever you are imparting to children, professional motivation and self-regulation, and of course cognitive से directly भी आप जर्नल पेडागॉजिकल जो हमारी नॉलेज है उसके बारे में भी बातचीत कर सकते हैं।
जब हम 4 डोमेन्स की बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटेंस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पर्सपेक्टिव्स। स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज देयर ओन एंड अदर्स पर्सपेक्टिव, communicate ideas, take action, investigate the world। वर्ल्ड में क्या हो रहा है? आज क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, कार्बन न्यूट्रल की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 की बातचीत हो रही है, एजुकेशन फॉर एवरीबडी एट द different places at different time zone in their own learning process की बातचीत हो रही है। तो ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज की जब हम बातचीत कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इट्स ए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। कोई भी अकेला प्रोग्रेस नहीं कर पाता, यू ऑल हैव टू बी टुगेदर। हु इज ए ग्लोबल टीचर हु इज हैविंग कॉम्पिटेंसीज? आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले कहा था, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो कुछ आप संसार में देखना चाहते हैं, पहले अपने भीतर के संसार में उस बदलाव को लेकर आइए, एंड देयर आफ्टर यू विल सी। सो टीचिंग फॉर ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज की जब हम बातचीत करते हैं, तो हमारे विजन में आता है व्हाट टॉपिक्स मैटर द मोस्ट टू टीच। कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको हम कवर करें, जिनको हम लेकर चले। थ्योरेटिकल पढ़ाना, इररिलेवेंट पढ़ाना, सिलेबस को पूरा करने के लिए पढ़ाना, और सिर्फ एक करिकुलम को कंप्लीट करके डिलीवर करके कर देना, उससे कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से जब हम बाकी चीजों को लेके चलते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट विल स्टूडेंट्स डू टू लर्न। दैट इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट सीखने के लिए, लर्न करने के लिए क्या क्या करेंगे, और आप क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाएंगे, एंड हाउ विल यू कम टू नो that students are making progress, students are really learning from your competencies as a teacher। उन सब चीजों को भी हमको ध्यान में, पर्सपेक्टिव में लेकर चलना होगा। That is something very important. Now, teaching strategies for globally competent teachers। आइए कुछ 7-8 पॉइंट्स पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले आइए, emphasize relevance of the global learning to students' life। वो पढ़ाइए जिसका रोजमर्रा की मेरी जिंदगी के अंदर कोई महत्व है, कोई इंपॉर्टेंस है, कोई यूटिलाइजेशन है। टीच स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट एंड लर्न फ्रॉम डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड कल्चर्स। आपको अलग अलग अप्रोचेस लेनी होगी। इस चीज को अगर हम ऐसे इस्तेमाल करें तो क्या होगा, इसको ऐसे करें तो क्या होगा, इसको यहां रखें तो क्या होगा, ये चीज अगर ऐसे हो तो कैसे होगा। दैट इज, यू गॉट टू ट्राई नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। Provide opportunities for students to discuss global issues। They should take local to global, global to local, जो भी है, लेकिन you have to work out a strategy। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। आप आइसोलेशन में नहीं जी सकते। आप एक कमरे में बंद होके आप ये कहो कि मेरे स्कूल में, मेरे इंस्टीट्यूट में जो मुझे पढ़ाया गया, that's fine। No, you got to be globally connecting yourself। Use resources that represent मल्टीपल ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। संसार के पास खिड़की खोलिए, दरवाजा खोलिए, बाहर झांकिए, बाहर निकलिए, देखिए क्या हो रहा है। यूज एन इंटरडिसिप्लिनरी लेंस एंड अलाइन ग्लोबल लर्निंग टू रिगरस कंटेंट एंड एरिया स्टैंडर्ड्स। जो कुछ आपको अपने इलाके में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने एरिया में चाहिए, वो तो लीजिए, बट एट द सेम टाइम अलाइन योर लर्निंग एंड योर व्हाटएवर यू आर एक्वायरिंग विद द ग्लोबल सिस्टम, कि संसार में क्या हो रहा है। अब आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, व्हाई इंडिया इज ओपनिंग 100 फॉरेन इंस्टीट्यूट, कम डाउन टू इंडिया, डिजिटल एजुकेशन, ऑल ऑफ अस टुगेदर। ऐसा क्यों है कि आईआईटी में स्टेम के साथ साथ स्टीम भी आ रहा है, अब आर्ट भी आ गई, आर्ट में डांस भी है, म्यूजिक भी है, और आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर आर्ट्स के सब्जेक्ट भी हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, इंजीनियरिंग भी है। उन सब चीजों को जब हम लेकर चल रहे हैं, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टीचर, if you want to be globally competent, you got to practice empathy in everything, and you got to value the multiple perspectives। हर बच्चे का जो भी आइडिया है, उस आइडिया में कोई ना कोई गहराई है।
जो भी बच्चा कुछ कह रहा है, उसकी सोच में, उसके कहने में, उसके पर्सपेक्टिव में, उसके परसेप्शन में, उसके विजन में कोई चीज ऐसी है, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए और उसको एनलाइटनमेंट दीजिए और उसको कहिए, योर आइडिया इज वेरी ब्राइट, वेरी गुड, लेट्स सी हाउ वी कैन कोलैबोरेट विद अदर्स, हाउ वी कैन टेक इट टू द ग्लोबल लेवल. All that is very important. Appreciate diversity and commit to equity worldwide. You know, that is something very important. Appreciate to कीजिए diversity को, लेकिन commit to equity. That is something very important. And finally, understand what are the global conditions, what is the global environment, and what exactly events are taking place in the past and in the present, and what are multiple cultures. Because if you understand others' culture and from others' lens, अगर आप दूसरे के नजरिए से देखेंगे तो कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. Now, when you talk about framework for developing global and cultural competencies, अब आप देखिए, एक तो ग्लोबल के टीचर्स की, एजुकेशन की, अपनी पेडागोजी की, अपने सब्जेक्ट की, अपने करिकुलम की कॉम्पिटेंसी है. उसी के साथ साथ हम ग्लोबल और कल्चरल कॉम्पिटेंसीज को भी लेके चलते हैं टू एडवांस इक्विटी, एक्सीलेंस एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस. यू नो, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना है. Early learning, elementary stage learning, secondary learning, post-secondary learning, higher learning, whatever is happening globally and culturally, you got to make competent individuals. हर बच्चे के गुणों को बाहर निकालना है, उस बच्चे को तैयार करना है. And when we talk about global competence metrics, we all have to understand जो global competence है, it is in the knowledge, it is in the skills, it is in the disposition, and it is to understand and act creatively and innovatively issues of the global stature and global significance. Investigate the world, try and find out, recognize the perspectives, communicate the ideas, and thereafter, after communicating the ideas, you must take action also, क्योंकि आइडिया ही रह जाता है अगर आप उसको एक्शन में नहीं बदलते, उसको रियलिटी में नहीं बदलते और उसको आप एक स्वरूप नहीं देते. ग्लोबल कॉम्पिटेंस मैट्रिक्स की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट द वर्ल्ड बियॉन्ड देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स, they recognize their own and others' perspectives also. Students, they communicate their ideas effectively with a diverse audience, and students, they translate their ideas and findings into appropriate actions to improve conditions. That is something very important. All the dignitaries, those are joining us on the YouTube, we extend a very hearty welcome. Mohit Chaudhary ji, Julie Supaji, Students Query the group, Prachita Kalita, and Kaithu Chaudhary. That is great. Thank you very much. And then Nishank Maurya and Sakshi Chauhan and Wamizu Vero. And then we have got Ajay Kundalji. We have got Nanlai. We have got Manisha Chaudhary, Chaturvedi. My apologies. Manisha Chaturvedi. We have got K. Jobalakshmi. We have got Ishita Shukla, we have got S. Bosa, we have got Pooja Sharma, we have got Nancy Sangma, we have got Anjan Kumar Bora, Rishi Mohan, Laishram Damini, Kim Kipkin, Deepa Hazarika, and Claudia Langwa, and Anand Mukherjee. Babu Moshai, thank you for joining. Julie ma'am is writing, the journal Global Competence Matrices can be used to both apply and assess the global competence across curricula and disciplines. Yes. And Vamuzo Vero, she's writing, global competence is the skill, values, and behavior that prepares young people to thrive in the more diverse and interconnected world. We have already mentioned, you cannot live in isolation. You've got to be with others. अब 21st century की जो learning है हमारी, students ये कहते हैं, भाई ये subject मैं क्यों पढ़ूं? ये चीज मैं क्यों सीखूं? इससे मुझे क्या मिलेगा? इसका क्या फायदा है? कुछ तो बताओ ना मेरे को. इसके अंदर से कुछ तो निकलेगा. So, when you're talking about the blending of literacy, technology, career orientation, social responsibility,
creative problem solving, experiential learning, and that all comes into learning agility. Now, 21st century students outcome and support system, when we talk about, ladies and gentlemen, critical thinking and your communication and your collaboration and your creativity, these 4 C's are very, very important. Now, life and career skills, information, media, technology, what all is going around, the core subjects also, when we talk about 3 R's and 21st century themes, standards and assessment, curriculum and instructions, professional development, and the most important is आपकी learning environment कैसी है, आपके वहां का वातावरण कैसा है, आपकी क्लास का माहौल कैसा है, आपके टीचर्स की कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है. Now, competency को जब हम describe करते हैं, तो there are a couple of things, लेकिन most important is critical thinking is very important because it involves using reasoning and criteria to conceptualize, evaluate, or synthesize the ideas. Students reflect on their thinking to improve it. They challenge assumptions behind the thoughts, belief, or actions. Students, they value honesty, fairness, and open-mindedness of the teachers, educators, trainers, coach, mentors, and counselors. When we talk about Asia society and we talk about assessing the global learning, it's very important, ladies and gentlemen, understand the world through the disciplinary and interdisciplinary studies, that has to be taken. So investigate the world, recognize the perspective, communicate the ideas, and take action. If you remember, we have discussed earlier, here is the further details of the same. These are the Sustainable Development Goals, 17 of them. By 2030, we all were running to achieve them the best possible way, but the coronavirus has given a little bit of a jolt to all this, and there might be some kind of a shortage in achieving perfection in everything as desired before Corona. Now, how do we increase teachers' competencies? When we talk about global competency, you got to understand and appreciate the perspective and the worldview of the others. और लोग क्या सोचते हैं, और लोग क्या समझते हैं, और लोगों का क्या सोच चल रही है. Engage in the open, appropriate, and effective interaction across the different cultures. Take actions for collective well-being and sustainable development. Examine local, global, and intercultural issues. Whatever you can, put your hands. Excuse me. So let's move ahead. And what could be the key ideas around teaching towards global competency? Now, first of all, you must develop empathy, compassion, seeing the world from someone else's perspective, knowing the world is bigger than your immediate environment, understanding our common biological humanity, seeing the case studies, where from the food comes, how does the food is grown, what is globalization, why there is a pandemic, why there was Spanish flu, why there is COVID-19, how there is going to be a food shortage in world, how do I contribute towards, controlling and taking care of global warming? How do I contribute towards climate change controlling? We do not want the ice to melt and there's a flood and then the whole temperature and problems and difficulties world over and imbalances. Do you know if the ice starts melting in those glaciers, many of the countries will just disappear. Now, ladies and gentlemen, when we are talking about competencies, the leadership, the teaching, the key competencies when you talk about, and the student's experience, all you have to take into consideration. That is something very important. You got to create appropriate culture. You got to adapt the adequate, desirable pedagogy. You got to adopt a system which are result-oriented. You got to work in network and partnership, and you got to adopt the change which is coming very, very fast. That is something
very important, which we have to take into. And ultimately ये सब कुछ पढ़ाई लिखाई, टीचर्स कॉम्पिटेंस और उनकी क्वालिटीज को एनहांस करना, उनकी स्किल्स को, कॉम्पिटेंसीज को, कैपेबिलिटीज को, ये सब किस लिए है? स्टूडेंट्स को बेनिफिट होना चाहिए, अल्टीमेट बेनिफिशियरी को बेनिफिट होना चाहिए। कल को बच्चे क्या बनेंगे, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप लेंगे, कौन सी एम्प्लॉयमेंट लेंगे, कहाँ स्टार्टअप बनेंगे, उन सारी चीजों को हम लेंगे। जब हम ग्लोबल कॉम्पिटेंस की बातचीत करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड अवेयरनेस ऑफ द क्रिएचरल वर्ल्ड इज very important. Again and again, when we say emotional intelligence, means the cultural awareness, curiosity, empathy, open mind. Communication की बातचीत है तो we have to adopt the proficiency in different language. जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं भारत का हूं, मैं अपनी भाषा को प्यार करता हूं, अपनी मदरलैंड को, अपनी मातृभाषा को सम्मान देता हूं। लेकिन अगर मुझे बिजनेस करना है, कोई काम करना है, आई गॉट टू बी proficient in that particular language wherever I want to take up a job and I want to start my work. That is something very important. और फिर मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना होगा, डाइवर्सिटी ऑफ द एक्सपीरियंसेस, लाइफ एंड वर्किंग अब्रॉड, और उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की नॉलेज हो, मैं अंडरस्टैंड करूं कि वर्ल्ड का कल्चर क्या है, ग्लोबल की कनेक्टेडनेस क्या है, लोगों से लोग कैसे जुड़ते हैं, that all is important. So ladies and gentlemen, competencies for the global teachers is the utmost importance, and competency based education is once again is highly important in the coming times. अगर हम ग्लोबल सिटीजनशिप की बातचीत करते हैं तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को हम यूज करते हैं, एनकल्चुरेशन, एक्चुलरेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ये सारी चीजों को जब हम लेकर चलते हैं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड विच आर द डिफरेंट टर्म्स, लर्निंग ओन कल्चर, लर्निंग ए कल्चर अदर देन ओन कल्चर, एंड व्हेन यू आर लिविंग इन different country, how do you adopt their culture, understand their culture, respect their culture? How do you enter and reside in a different country which is not your own home country? How you are an immigrant? उसके बाद अपनी कंट्री को छोड़कर जब दूसरी कंट्री में जाकर रहते हैं तो वहां के सिस्टम को कैसे अडॉप्ट करना है? So teachers, you got to prepare our students with the global competencies, and you got to take on the metrics into consideration. We are very proud, we are very happy, and we are thankful to Almighty that on 25th of March 2020, पैंडेमिक के आते ही हम लोगों ने कंप्लीट लॉकडाउन के साथ टीचर्स और यूथ के ऊपर फोकस किया, और हर रोज हम बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स करते रहे, एंड ड्यूरिंग द entire lockdown period, we have done about 1,600 webinars in a very humble way. And they are on to different trajectories, different themes. But of course, everything is related to education and skills and competencies. Now, we are also very happy that our chamber brought India's first finishing school for the service industry, where basically it is an inspiration. Because education, empowerment, entrepreneurship, critical thinking, logical thinking, lifelong solutions, and creative thinking is very important. More than 52,000 youth have gone from here, 35,000 teachers have gone there. और post pandemic के बाद दीवारों से बाहर आ जाइए, स्कूल से बाहर आइए, कॉलेज से बाहर आइए, नेचर के साथ जुड़िए, इंस्पिरेशन लीजिए, अपने आसपास की प्रकृति को देखिए, फ्लोरा एंड फौना के साथ रहिए, ग्रीनरी को रिस्पेक्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। आप देखिए कोरोना काल के अंदर नेचर ने अपने आप को क्लीन किया, गंगा कितनी क्लीन हो गई थी आपने महसूस किया होगा जब आप पैंडेमिक के अंदर सब कुछ लॉकडाउन था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पोस्ट पैंडेमिक, if we have got physics lab, chemistry lab, bio lab, computer lab, why not inspirational lab? Why not to bring positivity all around in every school, college, university, ITI, polytechnic, vocational training center, skill center? Because we want curiosity, creativity, imagination, innovation, design thinking, critical thinking, adaptive learning, immersive learning. All that is required. Inspirational lab is future. This is the brainchild of International Chamber for Service Industry. Everything is digital, digital, and digital.
You don't require any physical infrastructure anywhere. Your mental wellness, physical wellness, professional wellness, social wellness, और आपका कोई ना कोई रोजगार का काम हो, economic wellness is also very important. Teachers, you are the change maker. Teachers, you prepare the future. Teachers, your competencies is going to make a better world. Capacity building of teachers is very important. Let's set up inspirational lab preparing youth and the teachers. And finally, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. Let's come together. Let's make education and skills relevant. All of us, we work together. Today, we have completed 1,742 webinars, having started on 25th of March 2020. I would request each one of you subscribe this so that you get the advance intimation which program is coming up. मैं पता नहीं कब किस समय कौन सा विचार आ जाए और आप लोगों के साथ एक अच्छा सा वेबिनार हम शेयर कर दें. तो YouTube के ऊपर ICSI इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्यूज दीजिए. जैसे निशंक मौर्य जी, पंकज त्रिपाठी जी, निशा अग्रवाल जी, they are sending lots of the comments during this. कल सुबह, कल रविवार है और देखिए, Sunday is more important than the weekdays. Sunday we should work more as compared to other days. किसने बनाया संडे? किसने कहा कि संडे को छुट्टी होनी चाहिए खाली और कोई काम नहीं करना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया, जिस दिन से भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला है और अपने हाथों में लिया है. कल हम मंडुक्य उपनिषद की बातचीत करेंगे. द रियलिटी ऑफ द वेकिंग ड्रीम एंड डीप स्लीप स्टेट्स. सपने क्यों आते हैं? सपने मुझे सोते हुए क्यों आते हैं? जब मैं जगता हूं तो उन सपनों से बाहर आ जाता हूं. जब सपनों में होता हूं तो ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है. पूरी एक फिल्म चल रही होती है और आप एक दूसरी दुनिया में होते हैं. लेकिन जागृत अवस्था में आते ही वो स्वप्न की अवस्था चली जाती है. कल बहुत अच्छा मंडुक्य उपनिषद पर बातचीत करेंगे, कल सुबह 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार. और देखिए, हमें आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है. आपकी फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, और आपकी डाइट अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, और विश्व कल्याण के लिए आयुर्वेदा हो. ग्लोबल वेलनेस एंड हेल्थ टूरिज्म पर कल आयुर्वेदा के लिए परम शुद्धि सप्ताह, अग्नि एंड इट्स इंपॉर्टेंस की बातचीत करेंगे. रोल ऑन द ह्यूमन बॉडी. कल हमारे साथ शाम को 7 बजे जुड़िएगा डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी के साथ. और कल रात का कार्यक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, हम विदेशियों से ही बात करेंगे, NRI से ही बातचीत करेंगे, और नॉन रेजिडेंट इंडियन ही आपको बताएंगे हाउ टू डू द प्रिपरेशंस टू गो अब्रॉड. एंड we will have a case study of destination Canada. क्योंकि आजकल कनाडा का बहुत क्रेज है. बच्चे पढ़ने के लिए वैसे किसी भी ढंग से बाहर जाना चाहते हैं. और देखिए, ये आपकी मिथ्या है. आप अमेरिका भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं, यूके भी जा सकते हैं, और अब तो देखिए पोर्टुगल में भी लोग चाहिए, आपको क्रोएशिया में भी चाहिए, और बहुत सारी कंट्रीज की हम बातचीत करेंगे आपसे. Where all the world over population is aging, where do we require Indian human resource, और भारतीय कहाँ विदेश में जाकर उन सारे गैप्स को फिल कर सकते हैं, इसकी हम बातचीत करेंगे. कल रात को आपके साथ इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं. कल सुबह 9:30 बजे पुनः आपसे मुलाकात होगी. इंस्पायर्ड रहिए, एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, डायनेमिक रहिए, पैशनेट रहिए, और इतनी एनर्जी भरिए. क्योंकि देखिए, हम चंडीगढ़ को द क्लीन सिटी, द नीट सिटी, द serene city, and the beautiful city, where we have got a very dynamic advisor to the administrator and his entire team in the education ecosystem of Chandigarh. हम चंडीगढ़ को as a role model for education, for skills, for research, for innovation, उस डायरेक्शन में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं. तो आइए, कल शाम को, और कल सुबह, और कल दोपहर के बाद, यानी कि पूर्व संध्या में 7 बजे भी, 9:30 बजे, 7 बजे और रात के 8 बजे, कल 3 कार्यक्रम होंगे. हो सकता है इसके अलावा कोई और चौथा कार्यक्रम भी हो जाए, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता. लेकिन अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन उसी लिए मिल जाएगी.
ICICI इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे साथ जुड़िए।